Hello everyone, very good morning to all the parents and my dear students who are watching out this video. Let me give you my introduction. My name is Dhairya Joshi and I am the English teacher. I will be taking English in all the sections of Standard 3rd. Standard 3rd A, 3rd B, 3rd C, 3rd D and 3rd E. Along with it, I am the class teacher of Standard 3rd A. I am qualified in BSc and I have been teaching to the students since last 2 years. So moving forward to the books and the materials. This is our textbook of Standard 3rd. The name of the book is English Junction. It is by Orient Black Swan Publication. The author of the book is Dr. Sampson Thomas. In this book we have all the chapters and the poems in it. Along with this book, we will be having the worksheet. This is our worksheet. It is for the PA1. All the homeworks and the additional works has to be done in this worksheet. There are exercises, writing portion, passages, and other grammar topics in the worksheets as well as textbook. This is the worksheet for the PA1. Similarly, we also have worksheet for the Term 1 and other two examinations, that is PA2 and Term 2. So now, as we all know, due to the pandemic situation, there are many ups and downs in our life. This is the same situation along with our children. They are also suffering many issues due to the ban of the school and online education. Okay, so to change this scenario, we are coming up with something new this year compared to the last year. In this academic year, we will be having the competitions and all the activities which we were doing in the school, that will be done in this academic year. So the children can feel the same atmosphere at their home which they were feeling during the regular physical schools. There will be the quarterfinals, semi-finals, all the competitions, dance, music, sports, game, and each and every activity that were being performed during the regular physical school sessions. So if you have any queries or any issues regarding to the English subject, please let me know without any hesitation. Thank you so much. Hello students, we will start our English from today itself. We won't go to the deep, but firstly we will discuss some of the basic full forms which we are going to use throughout the year. So take a CW book and write along with me. ये सारे फुल फॉर्म्स हम पूरे साल यूज़ करने वाले हैं, तो आप सभी अपनी CW बुक निकालिए और मेरे साथ ये सारे फुल फॉर्म्स एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? द फर्स्ट विल बी TB. What is the full form of TB? TB means text book. So this is our textbook. Okay, TB is the short form of our textbook. So now what is the second thing? The second full form is of WS. So what will be the full form of WS? WS means our worksheet. WS का फुल फॉर्म होता है वर्कशीट. So now the worksheet we will have is for the PA1, Term 1, PA2 एंड टर्म 2. हमारी जो वर्कशीट है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा?
WS. So now the third thing is HW. ये तो सबको पता ही होगा. What does HW means? HW means homework. Okay. जो homework मैं आपको सभी को दूंगा in the worksheet or in the homework book is the HW. That means homework. Now the fourth one. The fourth one is CW. The full form of CW will be class work. CW का फुल फॉर्म क्या होगा? क्लास वर्क. मतलब जो चीज़ें हम क्लास वर्क मीन्स जो चीज़ें हम क्लास में करेंगे उनको बोलेंगे हम क्लास वर्क. अभी तो हमारी क्लासेस बंद है, कोविड के कारण हमारी स्कूल बंद है इसीलिए. लेकिन जब रेगुलर स्कूल स्टार्ट होगी, फिज़िकल स्कूल स्टार्ट होगी, जो चीज़ें हम क्लास में करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? क्लास वर्क. ओके. सो आफ्टर दिस वी विल मूव टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश and we will see the summary of the first chapter. Okay. Now we will see the short summary of the first chapter. So everyone open your textbook at page number 1. What is the first chapter? The first chapter is No Smiles Today. No Smiles Today. The author of the chapter is Cheryl Rao. फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? नो स्माइल्स टुडे. उसके ऑथर का नाम क्या है? चेरिल राव. चेरिल राव उसका ऑथर है. सो व्हाट डज द हेडिंग इंडिकेट्स? नो स्माइल्स नाउ. आज हंसना नहीं है. तो क्यों नहीं हंसना है? व्हाट विल बी द रीज़न बिहाइंड इट? What are the characters? We will see now. Okay. So the main characters of this chapter is Shanti, Arun, and the Miss Sona. These three are the main characters of this chapter. Shanti और अरुण good friends है. Shanti and Arun are good friends, and Miss Sona is the teacher of Shanti and Arun. You can see this is Arun and this is Shanti. This is Miss Sona. She is the teacher of Shanti and Arun. Okay. So what is the story? We will start from the Monday. But now we will do the warm up. So work in pairs, read the situations given below and role play the emotions that would feel. So क्या करना है हमें? ये सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. ये स्टेटमेंट्स के पढ़ने के बाद हमें डिसाइड करना है कि कौन सा इमोजी कौन से स्टेटमेंट को रिलेट करता है. ठीक है. What is the first one? You reach home after school. Your mother serves you a hot delicious lunch. आप स्कूल के बाद घर जाते हो. ठीक है. आप स्कूल के बाद घर जाते हो. आपकी मम्मी आपके लिए एक बहुत ही डिलीशियस लंच प्रिपेयर करके रखा है. तो इस बात पे आपकी जो फीलिंग होगी वो क्या होगी? आपके एक्सप्रेशन क्या होंगे? हैप्पी होंगे, सैड होंगे, एंग्री होंगे और सरप्राइज्ड होंगे. What will be your emotion? Your emotion will be happy. क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी ने बहुत ही डिलीशियस लंच आपके लिए प्रिपेयर किया है. So we will give first number to this emoji. Okay. First number to this emotion. So everyone give happy emotion number 1. Is that done? Okay.
So now what will be the second? Second is your father announces that the trip planned with your family in the summer has to be cancelled. क्या है इसमें कि आपके पापा ने आपको बोला है कि जो समर में हम ट्रिप के लिए जाने वाले थे वो ट्रिप हमारी कैंसल हो गई है. सो व्हाट विल बी योर इमोशन? यू वुड बी हैप्पी, एंग्री और सरप्राइज. आप क्या होगे इस बात पे? आप क्या होगे? सैड हो जाओगे, अपने पापा पे गुस्सा हो जाओगे कि आप सरप्राइज हो जाओगे? यू विल बी सैड. यू कांट बी एंग्री अपॉन योर फादर. हम पापा पे गुस्सा नहीं करते, वो अच्छी बात नहीं है. सो यू विल बी सैड. सो व्हाट विल बी द सेकंड नंबर? सेकंड नंबर विल बी द sad. So everyone gives second number to the emoji of sadness. This is the emoji of sadness. Is that done? Take your time and understand the things. Okay. Sorry for the disturbance. So now we will move to the third one. What is the third one? Your water bottle has leaked into the school bag and all your books are wet. Oh, आपकी वाटर बोतल में से पानी लीक हो गया है आपके बैग में और आपकी सारी बुक्स, आपकी सारी किताबें गीली हो गई है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट विल बी योर इमोशन? What would you feel? Happy? Would you feel happy or sad? Or angry? Yes, you will feel angry. Okay? हमारी सारी किताबें गीली हो गई तो हमें गुस्सा आएगा. Okay? So what will you do? We will give number 3 to the emoji of anger. Everyone give number 3 to this emoji. Is that done? Okay. So now is number 4th. You are dusting your bookshelf and find a 10 rupee note in one of the books. Wow, that's great. That's great. क्या बोला है कि आप अपना बुक शेल्फ मतलब जिस जगह पे आप बुक्स रखते हो वो क्लीन कर रहे हो, ठीक है, और उस जगह पे आपको एक 10 रुपये का नोट मिलता है. यू विल बी फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड यू विल बी सरप्राइज. सो विच वन इज रिमेनिंग? दिस इज द लास्ट वन. सो दिस इज द इमोजी ऑफ सरप्राइज. सो वी विल गिव number 4 to this emoji. Everyone give number 4. Okay. Are your reactions the same? If they are different, then briefly discuss why. हम सभी के रिएक्शन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, ये हम सब ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है. सो वी विल रिवाइज a little bit. Okay. You reach at your home after school. Your mother serves a hot delicious lunch. आप स्कूल से होके घर पे जाते हो और आपकी मम्मी ने एक बहुत ही डिलीशियस लंच प्रिपेयर किया है. सो एट दैट केस यू विल बी हैप्पी. योर फादर अनाउंसेस दैट द ट्रिप हैज़ प्लान्ड विथ योर फैमिली इन द समर हैज़ टू बी कैंसल्ड. आपके पापा ने समर के लिए ट्रिप प्लान किया था, वो कैंसल हो गया है. तो ट्रिप कैंसिल होने की वजह से हम सैड हो जाएंगे, हम नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है. तो इसलिए व्हाट विल बी द इमोजी? इट विल बी ऑफ सैडनेस. Third one, your water bottle has leaked into your school bag and all your books are wet. आपके स्कूल बैग में आपकी पानी की बोतल है वो जो लीक हो गई है और आपकी की सारी बुक्स गीली हो गई है. So what would we feel? We feel anger. Why? Because all of our books got wet due to the leakage of the water.
So this is the third number, emoji of anger. Now number 4, you are dusting your bookshelf and find a 10 rupee note in one of the books. आप अपना बुक शेल्फ साफ कर रहे हो और उसी दौरान आपको एक 10 रुपये का नोट मिलता है. देन यू वुड बी सरप्राइज. वाई? यू कैन बाय चॉकलेट फ्रॉम अ 10 रुपी नोट और इधर यू कैन ईट एन आइसक्रीम. ओके, अभी वैसे आइसक्रीम और चॉकलेट्स तो नहीं खानी चाहिए, बट जस्ट फॉर एन टॉक. ओके, so you would be surprised. So this is the emoji of surprise and blushed. Okay students, so in the next lecture we will discuss no smiles today. We will explain the whole chapter and we will move forward in the next lecture. Okay, what are the characters of this chapter? The main characters are Shanti, Arun, and who is the teacher? She is the teacher. The name of the teacher is Miss Sona. Okay, so we will discuss the first chapter, No Smiles, today from Monday. Okay students, thank you everyone. Please stay at home, stay healthy.